All right, ladies and gentlemen, the Honorable Minister Shri Sarbananda Sonowal, along with the other delegates, have arrived. So now I would like to invite Shri Rajiv Jalota, Chairman, IPA and Mumbai Port Authority, to give a welcome speech. A warm good afternoon to everybody. I would like to welcome Shri Sarbananda Sonowal ji, Honorable Minister for Ports, Shipping and Waterways and Ministry of Ayush, Dr. Sanjeev Ranjan, Secretary Ports, Shipping and Waterways, Shri Shudhansh Pant, Officer on Special Duty, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Mr. Sanjay Bandhopadhyay, Chairman Inland Waterways Authority of India, who have graciously honoured us by their esteemed presence at the launch of this eagerly awaited platform that will go a long way in the ease of doing business for the shipping and maritime fraternity and aptly proves the motto, Make in India for the World. My fellow chairperson, Shri T.K. Ramchandran ji, who is spearheaded the development and implementation of NLP Marine with his extremely useful insights and domain knowledge, all my colleagues from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, chairpersons and deputy chairpersons of various major ports, colleagues from EY and Portol, and officers from the Indian Ports Association involved in the development of NLP Marine. Government of India has embarked upon the concept of transforming the logistics sector in the country to boost its trade and economy. The vision of having a unified logistics portal was kicked off by the conceptualization of National Logistics Portal Marine by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in 2021 to facilitate digitization and e-governance initiatives in the maritime sector. This project was built upon the concept of providing a single window for trade and compliance-related activities in the maritime sector. The implementation of this ambitious project was entrusted to the Indian Ports Association, which has fulfilled it with the assistance of other major ports. This portal will revolutionize the Indian maritime trade industry with its comprehensive reach and stakeholder inclusion. The platform brings about seamless process flow between the ports, trade, industry, regulatory agencies like customs, etc., and maritime service providers like shipping agency, finance organizations, and other service providers, thus transforming the whole gamut of EXIM trade by bringing about efficiency and transparency, streamlining the operations, reducing logistics costs, simplifying and expediting regulatory compliance. We are taking a big leap towards the ministry's vision of digitization, inclusion, innovation, empowerment, and enhancing governance. I once again thank you all for your gracious presence. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now we would request Shri Shudhansh Pant to hand over plant sapling to the Honorable Minister Shri Sarbananda Sonowal. Thank you so much. And now it is requested to IPA Chairman Shri Rajiv Jalota to please hand over the plant sapling to the Honorable Secretary of Minister of Ports, Shipping and Waterways, to Dr. Sanjeev Ranjan. Let us give a big round of applause. WAI. And now I would like to invite Shri T.K. Ramachandran, Chairman V.O. Chidambanar Port Authority, to give a presentation on National Logistics Portal, NLP. Thank you so much. Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways in Ayush, respected Secretary, respected OSD, Ministry of Ports, Mr. Sanjay Bandhopadhyay, Chairman IWAI, Shri Jalota ji,
Chairman IPA, and all the other dignitaries and members from the port community who are present here. To all of you, a warm welcome. This is a very important day for us in the port sector because we are here to witness the launch of the National Logistics Portal Marine, NLP Marine, on which we have been working for the past couple of years. As you're all aware, this was envisaged during the MIV exercise, Maritime India Vision exercise, and it was announced by the Honorable Prime Minister during the Maritime India Summit 2021, and therefore it is with great pleasure that we today are meeting here and we are going to witness a very historic moment when the NLP is launched by the Honorable Minister, exporter, customs broker and the freight forwarder. The second thing is that it provides end-to-end functionality to perform the digitally online transactions with custodians. Thirdly, it provides a level playing field to relevant stakeholders and increasing the competition, and tracking of the shipment is possible due to being online. Fifth, real-time information rather than batch processing, which yields information after some time, so it gives you real-time information. Fifth, it enhances G to B transparency because you can look at what is happening online. And next, document management system is also a part of this because all important documents can be stored and retrieved. It reduces time and costs because all these are very important for the trade. The moment time is reduced, costs are reduced. Then paperless transactions. Since we don't have paper moving within systems, it becomes a paperless system, and therefore very important for the trade. And finally, the IMO's MSW, the Maritime Single Window Mandate, which means from 2024 January 1st, the IMO has mandated that we must move towards a single window, and where all the different stakeholders, including customs, including the ports, including all the other participating government agencies, regulatory bodies, are all on the single window. And it's a great occasion because we might be among the first few countries which are actually implementing the MSW much before many of the other countries. So this will be a really historic moment if this gets converted into the MSW and we are able to fulfill the mandate of the IMO. This also takes into account the work already done under the port community system, the PCS 1X, which has been operational for quite some time, and the number of agencies that are involved in each of these pillars. We have 43 trade associations, we have 19 ministries, we have 61 PGAs and EPCs, and 30 latch-on service providers. So a latch-on service provider is nothing but some agency who already has online services, and all we need is an API to integrate between those who provide these services and the NLP, so that through the NLP you can avail of all these services. I keep saying jocularly that this is something like the Amazon or the Make My Trip or Ease My Trip of the logistics marine sector, where through this portal you can access services from a number of different agencies and government departments. Of goods, and then the regulatory certification platform, which takes care of the all the regulatory issues including customs, etc. And of course the financial and the insurance platform, which takes care of the banking and insurance needs. Port, if they want to provide services, every regulatory agency has to interact with the port, each port separately, each stakeholder separately. Now look at the beauty of this system where everything is integrated, put on one system, so anyone can access it, get information, provided they also give information. And therefore this information sharing becomes very easy, and the process is very robust, and inter-ministry collaboration becomes easier, and automated systems ensure that everything is done real time. Honorable Minister, respected Secretary, respected OSD, and other dignitaries present.
So overall, within the Ministry of Port, Shipping and Waterways, to bring in efficiency and optimize logistics costs, there has been a consistent push towards digitization in all activities. So this is a brief overview of some of the key initiatives that are going on and what is the roadmap for the future. Growth of India's $2.88 trillion economy. To make it competitive, there is a need to streamline procedures, reduce compliance burden and logistic costs. Digital infrastructure and e-governance can further enable this. With this vision, the Port Community System Software PCS-1X was developed by the Indian Ports Association under the guidance of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. Taking a new leap forward, the Government of India is now launching an ambitious program, the National Logistics Portal Marine. NLP Marine is a trust-based platform integrating multiple stakeholders such as ports, shipping lines, agents, surveyors, stevedores, banks, container freight stations, customs house agents, importers, exporters, railways, Concor, and existing government applications such as E-Vahn, Aadhaar, E-Sarthi, ICE Gate, Voice, Navy, DGLF, Prayas, LTV, etc. to ensure ease in doing business. It also aims to improve process experience in the areas of banking and insurance, services such as transportation and carriers, approvals and certifications from regulatory agencies, ancillary activities such as warehousing, container depots, port services, and most importantly, logistic cost and time, etc. The NLP Marine, a single window system for EXIM trade, optimizes the mission of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways by providing an ecosystem for seamless movement of cargo and improved maritime logistics. NLP Marine facilitates inclusion, digitization, innovation, empowerment, enhancing governance, and most importantly, making Bharat Atmanirbhar through the Make in India endeavor. Now, I would like to invite our Honorable Minister of Ministry of Ports, Shipping, Waterways and Ayush, Honorable Minister Shri Sarbananda Sonowal ji, to please launch the National Logistics Portal Marine. Let us give a big round of applause. नमस्कार। आज भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैराइन की लॉन्चिंग सेरेमनी में मंच पे उपस्थित डॉक्टर संजीव रंजन जी, सेक्रेटरी पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, श्री सुधांश पान जी, ओएसडी पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, श्री राजीव जलोटा जी, चेयरमैन IPA एंड मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, और हमारे बंदोपाध्याय जी, चेयरमैन इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TK रामचंद्रन जी, चेयरमैन टुटीकोरिन, सुशील कुमार सिंह जी, जॉइंट सेक्रेटरी, एंड R लक्ष्मणन जी, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, और आज इस सभागृह में उपस्थित सभी सभासदों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस सभा में भाग लिया और हमें हौसला दी और आज सभा को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाए। आप सबको मालूम है, देश की आदर्शवादी नेता, हमारे सबकी प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
मार्गदर्शन से आज देश में जो बदलाव लोगों ने देखी है और जो प्रगति हुई है, इसका मूल कारण यही है कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन के जरिए सही दिशा दी, जिसकी वजह से हर मंत्रालय आज अपनी शक्ति दिखाने के सिलसिले में नई नई कदम उठाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश के मुताबिक, उनके इंस्पायरेशन, उनके विजन के मुताबिक आज अलग अलग कार्यक्रम सफल रूप से हम लोगों ने उसको लागू करने में आगे कदम उठाए हैं। तो इसमें आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में जो पिछले साल नेशनल मास्टर प्लान, जो पीएम गति शक्ति और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सिलसिले में जो कार्यक्रम शुरू की है, इसके वजह से आज देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में काफ़ी प्रगति हुई है। और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अलग अलग विभागों को ये मनोबल दी है, दिशा दी है कि कैसे हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आप नई नई आधुनिक डिजिटल इनकॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी हम यहाँ ला सकते हैं। तो उसी नीति के आधारित कुछ दिन पहले नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, जिसके जरिए आज हमारी बिजनेस जगत की जो हस्ती है, जो स्टेक होल्डर है, उनके लिए एक बड़े सही दिशा मिल चुका है, जिसके वजह से सबका ही मानना है कि अगर इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को हम सही अपनाएं, सही लागू करें, तो निश्चित रूप से हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दुनिया के अलग अलग देशों का साथ कम्पीट करने के लिए हम इसको कॉम्पिटिटिव एक बड़े शक्ति के हिसाब से उसको खड़ा कर सकते हैं। और लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा लक्ष्य है कि 14% से 8% तक घटाने का। अगर यही हम लोगों ने बना पाया तो निश्चित रूप से भारत का हर एक्सपोर्टर हमारी दुनिया की बाजार कब्जा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा को हासिल करने के लिए हमारी मंत्रालय की तरफ से भी नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन आज लॉन्च किया गया है। उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे चेयरमैन ने आप लोगों को डिटेल में व्याख्या की है, प्रेजेंटेशन में दी रखा है। तो मुझे मानना है कि हमारे जितना भी स्टेक होल्डर्स है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, जो भी कस्टम्स हमारे से जुड़े हुए हैं, सबको मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा मौका मिलेगा और अपने सामान को सही समय पर कैसे सही स्थान पर हम सही समय पर डिलीवरी कर पाएंगे, इस विषय पर भी उनको हौसला मिलेगा। तो मुझे सब लोगों से यही आग्रह है कि आप इस विषय पर सब अगले दिनों में सहयोग करें। को हमारे जो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो लक्ष्य थे कि हमारे पोर्ट को आधुनिक रूप से सजाया जाए, मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन के सिलसिले में हम उसका शक्ति बढ़ाए, ताकि हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कोई दिक्कत पोर्ट में ना हो और अपने सामान को प्रोडक्शन से लेकर अप टू कंज्यूमर तक एंड टू एंड हमारे इसको डिलीवरी के सिस्टम में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। सिमलेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यही मूल लक्ष्य है। और हमारे एक्सपोर्टर का, हमारे जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर, उनके लिए इतना दिन तक जो दिक्कत हुई थी, अब मुझे लगता है कि ये पॉलिसी लॉन्च करने के बाद उन लोग को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि देश को जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के एक बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने का जो सपना उन्होंने रचना की है, उसको साकार करने में आज देश की जनता जुड़ चुका है। चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर, ऑल सेक्टर्स concerned with the export and import, everyone with the integrated effort, whether Ministry, Trade and Commerce and Industry, all the customs, Ministry of Finance, roadways, highways, airways, and like shippings, and every sectors all got integrated under the direction of Honorable Prime Minister, so that everyone could
contribute to the accessibility of this kind of service to the nation and हमारी जनता को भी अपने उपार्जन के सिलसिले में उनको भी शक्ति मिले, हमारे किसानों का उपार्जन भी दोगुना हो जाए। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और हर इंडस्ट्री को भी अपने उत्पादित सामग्री को अलग अलग दिशा पर भेजने का और ग्लोबल मार्केट में जो प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस में उनको भी टिकने का मुझे लगता है कि इसके जरिए बहुत बड़ा एक रास्ता मिलेगा। तो मैं निश्चित रूप से यही मानना है कि अगले दिनों में आप सब इस विषय पर हमें सहयोग करें। निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया गया है यूलिप से तो पहले नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के द्वारा जो प्लेटफॉर्म खड़ा की गए है और उसका हिस्सा बनने के बनने के कारण हम भी अपने की तरफ से हम कैसे और भी उसको एनहांस करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मुझे लगता है कि ये भी एक उसका लक्ष्य पूरा करने का बड़े महत्वपूर्ण कदम है, बड़े हिस्टोरिक इनिशिएटिव है। All this is happening only because of Honorable Prime Minister's vision and his impersonal kind of leadership. With these few words, I want to conclude, and I could assure you from the Ministry of Port Shipping and Waterways, whatever best possible support can be extended to our stakeholder, that would be done with the letter and spirit, because this ministry is committed to fulfill the objective set by our Honorable Prime Minister, so that like this nation become the $5 trillion economy tomorrow. So this is the ultimate goal, and to achieve that target, all the ministries with the integrated approach have got assembled together and working in the spirit of Team India under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And we are sure that we are going to achieve it. And because within a short span of time, in the last just 8 years, you have seen the changes, how India from 11th position of world economy went up to the extent of 5th position within a short span of time. That is the power of Honorable Prime Minister's leadership, and that is the power of his vision, and that is the inspiration he has extended to all the stakeholders, all the people of the country, and out of which now this result we could able to reflect through our action. And I believe in the near future, with this particular objective, we'll all be moving together. And today, whoever has extended all kind of support to develop this software, I am especially thankful to all of you here today, and particularly the IPS chairman, Mr. Jalota, and also the Tuticorin Port chairman, Mr. Ramachandran. They're all working together, and particularly in this aspect, all the senior officers, Sanjeev Ranjanji, Panji, and Bandyopadhyay, they were all been inspiring them with others like joint secretaries like Sunil Kumar Singh, Lakshmanan, because we are all working as a team. And with the team spirit, this has all been done. And this is mainly to fulfill the vision of our Honorable Prime Minister. With these few words, I conclude. I wish you all the good health and full of prosperity and happiness. Thank you. Jai Hind. Portal today, sir. The portal has been made possible because of the concerted effort of all my distinguished colleagues sitting on the dais, the colleagues from the ports, the colleagues from the IPA. I would like to thank all of them for the effort they have put in to make it possible. Because, like a few months back, Honorable Prime Minister last year launched the National Logistic Policy. Main objective was to have the seamless movement of goods and services, so that transportation cost can be put down to the extent of it, from double digit to the single digit. That was the main objective, so that our producer can be competitive in the global market. So this is the most important objective he has set. And to arrive to that objective, now our ministry has also developed this particular portal, and mainly for the EXIM trade. And as you know, in the maritime sectors, because whoever is involved, particularly the exporter and importers, they had to face a lot of hurdles to arrive to their original set destination. So to ease out all this kind of hurdles, a portal to Jugedi,
আমাৰ যিসকল আমদানি ৰপ্তানিৰ লগত জড়িত ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল বিজনেছমেন আছে আৰু যিবিলাক ট্ৰেডাৰ্ছ আছে এই সকলোৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ এটা সুযোগ বিকজ আমাৰ কি হয় সাধাৰণতে যিকোনো বস্তু বাহানি আপুনি যদি ৰপ্তানি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ল'ব লগা হয় অনুজ্ঞাপত্ৰ বিচাৰি থাকোঁতে আপোনাৰ বহুত সময় গুচি যায় গতিকে এই প্লেটফৰ্মটোৰ যোগেদি আপুনি যিখিনি যাৱতীয় যিমানবিলাক অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে ৰাস্তাৰ লাগে ৰেলৱে লাগে মানে বিভিন্ন পৰ্টৰ লাগে কাষ্টমৰ লাগে সকলোবিলাক একেলগে উপলব্ধ হ'ব আপুনি সেই অনলাইনৰ যোগেদি আপুনি গোটেইখিনি মানে অনুজ্ঞাপত্ৰ আয়ত্ব কৰিব পাৰিব উইদিন এ টাইম ফ্ৰেম ইয়াৰ যোগেদি কি হ'ব আপোনাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট বাঢ়ি যাব সময় বাচি যাব আৰু আপুনি গোটেই ব্যৱসায়টো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ হ'ব গতিকে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত তেখেতৰ ভিজনৰ কাৰণে এই সকলোবিলাক নতুন পদক্ষেপ ইয়াত সম্ভৱ হৈছে আৰু টেকন'লজিকেল ইনকৰ্পৰেশ্যন হৈছে ডিজিটাইজেশ্যন হৈছে গতিকে এতিয়া বিজনেছ জগতৰ বা আমাৰ বিশেষকৈ খেতিয়কৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ খেতিয়কৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাকো এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ পঠিয়াওঁতে যিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল এতিয়া সেইবিলাক অসুবিধা নাথাকিব একেলগে সকলোবিলাক যাৱতীয় কাগজ পত্ৰ পাব অনুজ্ঞাপত্ৰ পাব আৰু সেই পত্ৰবিলাক পাই তেখেতসকলে গন্তব্য স্থানত গোটেই তেখেতসকলৰ সামগ্ৰীবিলাক সঠিক মূল্যত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্টটো কম হ'ব আৰু সময় বাচি যাব